फर्स्ट आएंगे। हमारे विद्यालय की शुभकामनाएं आपके सामने, और हम यही चाहेंगे कि आप जीत के जाएं यहाँ से। सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, कॉन्फिडेंस के साथ करना है सभी को। ऑल द बेस्ट। Honorable members, I welcome you all to the 36th Zonal Level National Youth Parliament of 2025. I hope this session will be a fruitful one as we sit here deliberating the important matters concerning the nation. We'll start the session with an oath of affirmation. Secretary General, please. Srimati Chormila, who stands elected from Inner Parliamentary Constituency of Manipur, will now take the oath of affirmation. Srimati Chormila, please. Madam, do you want to take the oath of affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In Manipuri, please. I have. I have Jomla Laikambam Kunchataru Raksuba Youth Parliament Asigi Lok Sabha ki Thoburu Misak Ama Oina Kanvirak Lavamarina I have Nataibang Babu Sembi Sabiriba Sidaba Mapubu Panjadanawa Secretary Madudi Aina Linkriba Bharti Lingaklot Jatna Pathapu Aina Tasing na Thazaba Amadi Pukjil Sing na Ningzaba Ujagani Loinana Bharat ki Ningtamba Amadi Amata Orbay Saktambu Aina Yokatsagani Amasung Aina Paikhat Kadoriba Lokhat Kadoriba Ithau Dam Sing Pukjil Sing na Bangtok Jagani Imanin Bang Manipur ni ay Kare Jai Hind. Honorable members, I have to inform the House with a profound grief that Dr. Manmohan Singh, the former Prime Minister of India and an eminent economist, passed away on 26 December 2024 at the age of 96. Dr. Manmohan Singh served the nation with the great distinction in various capacities as the Finance Minister, the Member of Parliament, and most notably the 13th Prime Minister of India from 2004 to 2014. His tenure was remarked with economic reforms, inclusive growth, and a steadfast commitment to the democratic values. He was known for his humility, wisdom, and integrity in public life, and his contribution to India's economic growth and global standing will be remembered for generations. Honorable Speaker, sir, I rise before this august House with a heavy heart to express the nation's deepest grief and sorrow over the demise of the former Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh ji. Dr. Singh was a brave statesman whose intellect and vision defined an era. He led the country through global turbulence with extreme steadiness and courage. He had a great sense of humor. Dr. Singh was the person behind the transformation of the Indian economy in the 1990s. Sir, the nation and the House mourns with deep reverence for the fallen hero. May his soul rest in eternal peace. Thank you. माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा व्यक्तिगत भावनाओं से स्वयं को जोड़ते हैं और अपने राष्ट्र प्यार दुख में शामिल होते हैं। हम डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि विद्वता, विनम्रता और दूरदर्शिता की एक ध्वनि व्यक्ति की स्मृति का सम्मान करने के लिए अपना सिर झुकाते हैं। उन्होंने अपने प्रत्येक पद पर गरिमा लाई है। राजनीतिक स्पेक्ट्रम में उनका सम्मान हुआ है। स्मृति, चुनौती दोनों के समय में उनका नेतृत्व भारत के हार्दिक, सामाजिक, लोकतांत्रिक ताने बाने के गहरे समाज को दर्शाता है। भारत ने एक पूर्व केवल प्रधानमंत्री को भी नहीं खोया है, बल्कि तर्क, संयम और जिम्मेदारी के आवाज़ को खोया है।
मैं मेरी पार्टी और पक्ष की ओर से हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के शोक संवत परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ और डॉक्टर सिंह की विरासत की स्मृति हमारे आगे के मार्ग का मार्गदर्शन करती रहे। धन्यवाद। The House may observe silence for a short while as a mark of respect to the departed soul. Secretary General, we convey the message of condolence to the bereaved family. Yes, sir. Prime Minister to introduce the new ministers. Honorable Speaker Sir, I have pleasure in introducing to you and through you to the House my colleagues new ministers. Shri Kingston, Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Shri Neo, Minister of Irrigation and Water Resources. Thank you, sir. Now, the question hour start question 101, Srimati Rushta. Thank you, Honorable Speaker, sir. Question number 101. Will the Honorable Minister of Home Affairs be pleased to state A. Whether the government is aware of the steep rise in cybercrime, particularly financial fraud, identity theft, and cyberbullying affecting citizens across the country? B. If so, what specific steps are being taken to strengthen investigation capacity, rise in cyber awareness, and quick victim system? सभापति महोदय जी, NCRB 2022 की रिपोर्ट में बच्चों और सीनियर सिटीजन के खिलाफ साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं और लोकल सपोर्ट की कमी की वजह से उन्हें सहायता मिलने में देरी होती है। क्या मैं सरकार से ये पूछ सकती हूँ कि वे डिस्ट्रिक्ट लेवल साइबर सेल्स को एस्टैब्लिश कर रहे हैं ताकि वुमेन, एल्डरली सिटीजन और स्कूल चिल्ड्रन को समय पे सहायता और सुरक्षा मिल सके? धन्यवाद। Honorable Minister of Home Affairs. Honorable Speaker, sir, the government is tackling cybercrime through measures like I4C, National Cyber Crime Reporting Portals Awareness Campaign, like Cyber Jagrukta Divas. Advisories have also been issued to states and financial institutions. माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला और बाल अपराध निवारण योजना के तहत हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर साइबर पुलिस स्टेशन, फोरेंसिक लैब्स, ट्रेनिंग और विक्टिम सपोर्ट सिस्टम्स को मजबूत कर रहे हैं। NCRB 2022 के अनुसार बच्चों के करीब साइबर अपराध 65% और वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ 80% से ज्यादा बढ़ी है। To address the delay faced by this vulnerable group due to lack of local support, our government is working towards strengthening cyber crime infrastructure, ensuring timely help protection for victims, especially women, children, and the elderly. I think the funds have already been provided for this purpose. माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अपने साइबर स्पेस को सभी सिटीजन्स के लिए सुरक्षित बनाने के लिए कमिटेड है। Thank you, Honorable Speaker, sir. There are no supplementary questions. We'll now move on to the next question. Start question 102, Srimati Olivia. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 102। क्या शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ए. जुलाई 2025 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में क्या वास्तविक प्रगति हुई है? बी. 5+3+3+4 संरचना लागू करने एवं क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने हेतु कौन-कौन से विशेष कदम उठाए गए हैं? सी. NEP 2020 के तहत शिक्षा के निजीकरण को लेकर उठी चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है? धन्यवाद महोदय। Honorable Minister of Education. माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जुलाई 2025 तक 105 से भी अधिक विश्वविद्यालयों ने FIUP अपनाया है। PM विद्या और दिशा के माध्यम से 2500 से भी अधिक ई-लर्निंग रिसोर्सेज उपलब्ध करवाए गए हैं। वर्तमान में 40% राज्यों ने 5+3+3+4 संरचना को पूरी तरह लागू किया, which replaces the current 10+2 system, जिसे NCERT ने 14,500 PMC स्कूलों में लागू किया है। And Honorable Speaker sir, अब EITC ने JEE और नीट जैसी परीक्षाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में देने की मंजूरी भी दे दी है। धन्यवाद महोदय। Supplementary question number 1, Srimati Olivia. अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि केवल 40% राज्यों ने 5+3+3+4 संरचना को पूरी तरह लागू की है। ऐसे में बाकी बचे राज्यों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसे दूर करने के लिए सरकार ने क्या सहायता दी? साथ ही शिक्षा के निजीकरण और कम बजट को लेकर भी चिंताएं हैं तथा संस्कृत और भारतीय ज्ञान पर ज्यादा जोर
देने से यह डर है कि लिंग समानता, जाति और धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दे पीछे जा रहे हैं। इन सभी चिंताओं को दूर कर अच्छी और समान शिक्षा देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? धन्यवाद महोदय। Honorable Minister of Education. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से ट्रेन एजुकेटर्स एंड डिजिटल रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन इसे दूर करने के लिए केंद्रीय सरकार ने 630 करोड़ आवंटित किए हैं। निष्ठा ने अब तक 25 लाख टीचर्स को प्रशिक्षित किया, which shows a great significance in the education of India. And Honorable Speaker, sir, the allegations of undemocratic processes are misplaced, क्योंकि हमारे पॉलिसी तो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज को प्रमोट करता है। Many funds like Gender Inclusion Fund and Disability Focus Initiatives हमारी केंद्रीय सरकार की clear commitment towards equality को दिखाता है। धन्यवाद महोदय। For supplementary questions, we'll now move on to the next question. Start question 103, Sri Lanka. Mr. Speaker, sir, question number 103. Will the Honorable Minister of Railways please to state A, whether the government is taking time-bound steps to expedite the delayed Ziribam-Phal railway line and ensure its connectivity with other parts of the country, and B, the condition of the station infrastructure, fleet and safety arrangements, how the government is ensuring accountability in their implementation. Honorable Minister of Railways. Honorable Speaker, sir, our government is fully committed towards completing the Jiribam and Phal railway line at the earliest, जिसके तहत हम भौतिक कार्य पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, जो कि 90% से अधिक हो भी चुका है। The actual report states that only 65% of the total work has been complete. How can the Honorable Minister state that 90% of it has been done? Honorable member, this is a question hour and you're not allowed to intervene. Honorable Minister, please continue. Thank you, Honorable Speaker, sir. I'm pleased to inform the House that the line includes notable engineering achievements like the world's tallest railway bridge at Mumbai. Trial runs are underway on second sections. For B, the Imphal railway station is being developed as a modern multi-modal terminal with passenger and freight amenities. और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए safety features such as anti-lateral embankments, seismic resistant tunnel designs, and automatic signaling systems are being incorporated. Dedicated field signings are also in development to boost logistics. Thank you, Honorable Speaker, sir. Supplementary question number 1, Sri Lanka. Mr. Speaker, sir, what specific measures are being undertaken to ensure employment generation and skill development for local youth during both the construction and operational phases of the railway project in Manipur, and are the plans to connect this railway line with major economic corridors or to introduce semi-high-speed passenger and freight services to support local industries and farmers? Honorable Minister of Railways. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सुरंग इंजीनियरिंग, मिट्टी कार्य और स्टेशन रखरखाव में स्थानीय युवाओं को शामिल किया है, जिनकी संख्या 3,800 से भी अधिक है। Further, the Ministry, in partnership with the Skill Development Department of Manipur, has opened a railway skill training center in Imphal East, with an aim to train youth in operations, logistics, and safety systems. We're also ensuring that 70% of class 4 and support staff are hired locally. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह परियोजना केवल कनेक्टिविटी का नहीं बल्कि रोजगार और सशक्तिकरण का प्रतीक है, and for this, the railway line will form a crucial link to the Trans-Asian Railway Network under the Act East policy with a proposed extension to Moreh on the Indo-Myanmar border. A cold chain-based agro-fleet terminal near Nole is also planned to benefit our local farmers and traders. और अंत में 2026 तक इम्फाल को गुवाहाटी और सिंचर से जोड़ने वाली वंदे भारत सेवाएं शुरू करने के लिए व्यवहार का अध्ययन चल रहा है। धन्यवाद महोदय। Now I allow the Honorable Minister of Donor for the supplementary input. माननीय अध्यक्ष महोदय, जिरीबाम इम्फाल मोरे रेलवे लाइन को मिनिस्ट्री ऑफ डोनर द्वारा एक विशेष अवसंरचना परियोजना घोषित किया गया है। इस परियोजना के तहत वित्तीय सहायता और तेज स्वीकृति दी गई है ताकि भूमि अधिग्रहण, पुल निर्माण और स्टेशन कनेक्टिविटी जैसे जरूरी काम जल्दी पूरा किया जा सके। नॉर्थ ईस्ट रीजन लाइवलीहुड प्रोग्राम को भी इस कॉरिडोर के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि स्थानीय युवाओं और छोटे विक्रेताओं के लिए
नए रोजगार के अवसर बन सके। साथ ही हम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलके रेल से जुड़े इको टूरिज्म सर्किट्स डेवलप करने पर भी काम कर रहे हैं। इससे न सिर्फ पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि रेल लाइन शुरू होने के बाद क्षेत्र के अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक लाभ मिलेगा। धन्यवाद महोदय। The House appreciates the detailed replies. I hope both the Ministry will work in close coordination in ensuring an inclusive, speedy and a sustainable development of the railway connectivity in Manipur. This matter now stands closed. We'll now move on to the next question. Start question 104, Srimati Priscilla. Thank you, Honorable Speaker, sir. Start question 104. Will the Honorable Minister of Planning be pleased to state A. Whether the government's roadmap for Vikshit Bharat at 2047 includes measurable outcomes for poverty elimination, quality education, green economy, and youth employment? B. If so, the details of interministerial mechanisms, timelines, and monitoring strategies adopted to ensure equitable implementation across states, especially the Northeast. Thank you, Speaker, sir. Honorable Minister of Planning. Honorable Speaker, sir, our government has laid out the Vikshit Bharat at 2047 framework based on the following core themes, which includes number 1, economic empowerment, number 2, environmental stewardship, number 3, social inclusion, and lastly, number 4, technological leadership. Each ministry has been assigned measurable targets under a central coordination unit in NITI Aayog. These are measured quarterly, with real-time dashboards being tested in over 100 districts, including aspirational districts in the Northeast. We are focusing on youth development, local entrepreneurship, and climate-resilient infrastructure as key areas of transformation. Thank you, sir. There are no supplementary questions. We'll now move on to the next question. Start question 105, Srimati Bhushya. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 105 का युवा कार्य एवं खेल मंत्री महोदया ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने विशेष रूप से ओलंपिक में भारत के वैश्विक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कोई दीर्घकालिक नीति या रोड मैप तैयार किया है? यदि हाँ, तो उसके विवरण सहित ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए खेल अवसंरचना, प्रतिनिधि पहचान और वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? धन्यवाद महोदय। Honorable Minister of Sports and Youth Affairs. Honorable Speaker, sir, I thank the Honorable Member for raising this important concern. However, our government has already launched the Khelo India Mission 2.0 and the Target Olympic Podium Scheme (TOPS) as part of a comprehensive roadmap to uplift Indian sports to international standards. Over 1,000 Khelo India centers have been sanctioned across districts with a focus on talent from rural and tribal areas. The National Sports Development Fund is also being expanded for financial support to allied and budding athletes. We have also partnered with international coaching institutes to provide global-level training to our Olympic hopes. Special attention is being given to sports infrastructure development in Northeast India, Jammu and Kashmir, and aspirational districts. India's performance in Paris Olympics 2024 has reflected the success of these initiatives. Thank you, Honorable Speaker, sir. Supplementary question number 1, Srimati Bhushya. Speaker, sir, while elite athletes receive support, many talented players from villages and small towns drop out due to poor infrastructure. What steps is the government taking to identify and promote such grassroots level players and to make sports a viable career with education credit, job security, and pension benefits? Thank you, sir. Honorable Minister of Sports and Youth Affairs. Honorable Speaker, sir, under the Talent Search and Development Program, talented athletes from villages and small towns are being supported through the Khelo India Talent Development Pool with scholarships up to ₹6 lakh per year for their education and training. साथ ही खेल कोचिंग और मैनेजमेंट को खेलो इंडिया योजना में जोड़ा गया है ताकि युवाओं को खेलों में नए अवसर मिल सके। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त और पदक विजेता खिलाड़ियों को पेंशन सुविधा दी जा रही है, जिससे यह संदेश जाए कि भारत में खेल केवल एक जुनून
नहीं बल्कि एक सम्मानजनक और सुरक्षित करियर है। Thank you, Honorable Speaker, sir. Now, no more supplementary questions. We'll now move on to the next question. Start question 106, Shri Aditya. Thank you, Honorable Speaker, sir. Start question 106. Regarding the GST reform from 2025, which brings petroleum and electricity under GST and merges 6 tax slabs into 3. May I ask the Honorable Minister of Finance, A, will this truly reduce the compliance burden of small traders and MSMEs, but concerns about invoicing and bill time of goods? B, will it ensure price stability across the states and offer real relief to the consumers? And last but not the least, Mr. Speaker, sir, can the government verify is this reform genuinely for public welfare or is it just a way to increase revenue? Thank you. Honorable Minister of Finance. माननीय अध्यक्ष महोदय, जीएसटी सुधार 2025 हमारी कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी एवं एक रूप बनाने के लिए है। अब 3 स्लैब होने से अनुपालन सरल होगी। हमने छोटे व ग्रामीण व्यापारियों के लिए जीएसटी सहाय पोर्टल और जिला कार्यशालाएं शुरू की। साथ ही डिजिटल अनुपालन की टर्नओवर सीमा भी बढ़ा दी गई है। पेट्रोल व बिजली के जीएसटी में आने से राज्यों के बीच दामों में एक रूपता आई। और महोदय, जहाँ तक प्रश्न टैक्स बढ़ाने के तरीके का है, तो मैं सभी से यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यह सुधार टैक्स बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि स्थिरता, समानता और वन नेशन वन टैक्स के लक्ष्य को मजबूत बनाने के लिए है। We now move on to the next question. Start question 107, Srimati Jayalakshmi. Honorable Speaker, ma'am, question 107. Through you, I wish to ask the Honorable Minister of Health and Family Welfare about the growing stress and anxiety among the youth. What steps are being taken by the government to strengthen school mental health programs, expand tele-mental health services, and address the shortage of trained mental health professionals? I would like to request the Honorable Minister to inform the House about the implementation of these measures. Thank you. Honorable Minister of Health and Family Welfare. मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हम 7 से ज्यादा प्रारंभिक जांच, आत्महत्या रोकथाम और जागरूकता अभियान चला रहे हैं। दूर दराज इलाकों में भी मदद बहुत आज 24 घंटे टेलीकाउंसलिंग प्रदान कर रहा है। सवाल है द्वारा मनोचिकित्सा, सामाजिक कार्य और मानसिक नर्सिंग के नए कोर्सेज शुरू किए गए हैं। साथ ही शिक्षकों, आशा कार्यकर्ता को चल रही है ताकि बच्चों को मदद मिल सके। धन्यवाद महोदय। Now, question hour is over. No more supplementary, please. The House will now take up the privilege motion moved by Shri Rajesh Kumar against Srimati Salina, MP, for alleged derogatory remarks in a public interview, questioning the dignity of the House. Srimati Salina, please explain. Thank you, Honorable Speaker. I respect this House and understand the seriousness of the motion. My remarks were aimed to highlight procedure delays, not insult Parliament. If misunderstood, I regret any offence. Srimati Salina, privileges in the Articles 105 and 194 require us to uphold the Parliament's dignity. Your comments will harm public trust. Do you agree they may have crossed the line? Yes, Honorable Speaker. My intent was to address issues, not criticize Parliament. I apologize and assure full cooperation with the committee. Noted. The matter is referred to the Committee of Privileges. Members are reminded to exercise free speech responsibility. Honorable members, it is my privilege to extend a warm welcome to the distinguished delegates from the Kingdom of Thailand who are present with us in the Special Visitors Gallery today as part of their participation in the National Youth Parliament 2025. The delegation commenced the official visit with the arrival on the 1st of December and will conclude the program following a series of scheduled visits prior to the departure on the 4th of December. Honorable members, we are honored to have among us Ms. Shanana Srisagar, Secretary General of National Assembly, Thailand. Mr.
Nyapong Bonmi, Deputy Director of Department of International Relations, National and Ms. Kanyara Nyapong, Member of the House of Representatives, Thailand. India and Thailand share strong bonds of friendship rooted in history and culture, and their presence today reflects our shared democratic values and good cooperation. Honorable members, please join me in welcoming our esteemed guests with a warm round of applause. We will now move on to the papers for the day. Honorable Minister of New and Renewable Energy. Thank you, Madam. Madam, I beg to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions. Annual reports of the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2024-25 and review report on the National Solar Rooftop Scheme as updated till 30 June 2025, highlighting the progress made under PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana in compliance with Rule 266 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. Thank you, Madam. Honorable Minister of Jal Shakti. Honorable Speaker, Madam, I put to lay on the table a copy of the action taken statement on the recommendation contained in the 22nd report of the Standing Committee on Water Resources on the subject status and implementation of Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain campaign 2021 to 2025 as required under Directions 73A of the Directions by the Speaker. Thank you. Secretary General, the report message from the upper chamber of the Good Parliament. Honorable members, I have been directed to convey that the upper chamber of the Youth Parliament has passed the Women's Reservation Bill with due deliberation and majority support. The bill reflects the commitment of this Parliament to address the concerns of the people and uphold democratic principles. The same is now being communicated to this House of your kind attention and necessary action. Thank you. The House will now take up the calling attention motion. Honorable Member Srimati Salina. Honorable Speaker, ma'am, under Rule 197, I call the attention of the concerned ministers to a matter of urgent public importance. युवाओं के हाथों में कलम के बजाय स्टीयरिंग व्हील है. Youth unemployment situations at 24.7%. Engineers drive autos. MBA graduates earn ₹50,000 in call centers. क्या ये ठीक है, मैम? आपको ये जान के हैरानी होगी, हिमाचल floods claim 400 lives. Climate change is not distant, it's deadly. 12 crore farmers are in distress. Only per 1,000 people in rural areas, there are only 0.3 doctors. What is the government really doing? जहाँ डॉक्टर्स होने चाहिए, वहाँ सिर्फ डेटा है. 40% of rural India still lacks internet access. Digital Bharat सिर्फ स्लोगन से नहीं, एक्सेस से बनता है. So I urge the ministers to respond, क्योंकि देश के सवालों का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, पार्लियामेंट में मिलना चाहिए. Honorable Minister of Finance will respond first. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा दिखाई गई जो तस्वीर है वो अधूरी है. सरकार ने बेरोजगारी, कृषि संकट और डिजिटल डिवाइड को लेकर नारे नहीं काम किया है. पिछले साल 1.2 करोड़ नए रोजगार दिए गए, जो कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है. PLI, स्टार्टअप इंडिया और ऐसे कई सारे योजनाओं से लाखों युवाओं को अच्छी नौकरियां मिली हैं. PM मुद्रा से 38 करोड़ लोगों को सहायता मिली, जिसके माध्यम से युवा रोजगार के मांगता नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं. नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से हम 2.5 करोड़ नए रोजगार लाएंगे और Honorable member, please be seated. जहाँ तक गुणवत्ता का सवाल है, दिए गए 45 लाख जॉब्स संगठित क्षेत्र के हैं, जिनमें EPF, ESI और पेंशन जैसे सुरक्षा लाभ उपलब्ध हैं. हर साल 50 लाख से अधिक युवा इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं. और माननीय अध्यक्ष महोदय, हम संख्याएं जाते हैं, ये स्लोगन पढ़ते हैं, पर सच तो ये है कि स्लोगन से नहीं संख्याओं से देश बनता है. और हमारी सरकार जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, अपने काम के जरिए इसी सदन में देती है. माननीय सभापति महोदय, जो धरती से लड़े, जो तूफानों से टकराए, जो अपनी मेहनत से सोना उगाए, वही तो हमारे भारत को संभाले.
हमारे स्कीम से स्लोगन्स नहीं है, वे उनका अधिकार है और ये सरकार हमेशा हमेशा उनके साथ है। Madam Speaker, the opposition man's raised a concern regarding the farmer welfare and distress, which I, as a minister, deeply appreciate, and they should raise the concern. After all, farmers is the backbone of a sector that not only feeds the country but also fuels the nation. So let me clarify that MSP is now set 50% above the production cost for notified 23 crops. Farmer society has decreased to a significant 35% in last 5 years. Also, climate smart agriculture covers now 5 crore hectares of this Indian soil. Lastly, madam, special focus has been made to women farmers through SAGs, credit access and much more. Madam, as I conclude, I want to remind the House and the nation the word of Dr. M.S. Swaminathan that once said, and I quote, "If agriculture goes wrong, nothing else goes right." Thank you, madam. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं श्रीमती सरना जी के प्रश्न का सम्मान करते हुए उनसे यह कहना चाहती हूँ कि वह अपने आंकड़े ठीक कर लें, क्योंकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आयुष डॉक्टर्स को शामिल करके हेल्थ केयर वर्कफोर्स को दुगनी की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 10 लाख पैरामेडिकल स्टाफ प्रशिक्षित हुए हैं। और महोदया, ये सब इस बात का प्रमाण है कि सरकार सिर्फ डेटा नहीं बल्कि जमीन पे भी परिवर्तन ला रहे हैं। धन्यवाद। Honorable Leader of Opposition. माननीय अध्यक्ष महोदया, आंकड़े प्रभावशाली है परंतु जमीनी हकीकत अलग है। CMI के आंकड़े हमें बताते हैं कि अनौपचारिक क्षेत्रों में 150 करोड़ की नौकरियां खत्म हो गई। शुद्ध रोजगार सृजन नकारात्मक है। 86% की नई नौकरियां बिना सामाजिक सुरक्षा के हैं। वास्तविक मजदूरी में 8% की घटावट आई है, जबकि मुद्रास्फीति 12% बढ़ी है। Honorable members, please maintain the decorum of the house. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दिल से विनती करती हूँ कि कृपया कुछ नेताओं को ये समझा दीजिए कि जब विपक्ष के नेता बोल रहे हो तो बीच में बोलने की कृपा ना करें। तो मैं ये कह रही थी अध्यक्ष महोदय कि मैं इस बात पर एक कहावत कहना चाहती हूँ। कहावत ये कि रोजगार के सपने बस भाषणों पे सस्ते हैं, परंतु कागजी वादों के पंख हवा पर उड़ते हैं। स्वास्थ्य सेवा बजट सकल घरेलू उत्पाद में 1.8% और शिक्षा सेवा बजट सकल घरेलू उत्पाद में 5% की घटावट आई है। सरकारी सफलताओं में 40% बिस्तरों की कमी है। हम शहरी युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी, सड़कों में किसान की ऋण माफी और स्वास्थ्य सेवा बजट सकल घरेलू उत्पाद में 5% और शिक्षा सेवा बजट सकल घरेलू उत्पाद में 6% बढ़ाने की मांग कर है। Honorable Leader of the House. Honorable Speaker, ma'am, well, I thank the Honorable Leader of Opposition for expressing her perspective, though I fundamentally disagree with her way of characterization. Ma'am, when we assumed the office back in 2014, India was in the fragile five. Now it stands as the 4th largest economy globally. Sector employment has increased to 4.5 crore workers. Gig economy provides livelihood to more than 1.5 crore people. EPFO data proves this. India is now the 3rd largest startup economy with over 1.2 lakh startups, resulting in a $500 billion valuation. किसान की परेशानी के बारे में क्या कहेगा? बेशक विपक्ष के नेता बेशक। माननीय सभापति महोदय, पीएम किसान ने सीधे तौर पर 2.8 लाख करोड़ किसानों को प्रदान किए। मानव इतिहास में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष लाभ 1.5 लाख करोड़ फसल की बीमा से 5.5 करोड़ किसानों को लाभ हुआ। सिर्फ यह नहीं, 2014 के बाद किसानों में आत्महत्या की संख्या 35% से गिर गई। मैम, more than 25 crore people were lifted from poverty in the last 10 years. More than 220 crore doses of COVID vaccination was distributed freely among all citizens. Ayushman Bharat provided free healthcare of rupees worth over 85,000 crores. सभापति महोदय, मैं भी इस बात पर कुछ कहना चाहूँगा।
कर्मभूमि पर विकास के फल के लिए मेहनत हमने की है। कर्मभूमि पर विकास के फल के लिए मेहनत हमने की है। रब ने लकीरें दी और इन 10 सालों में पूरे देश को रंगों से भर दिया। The opposition spreads pessimism, but facts tell a completely different story. जब सत्ता एक अच्छी एवं एक दर्शनीय काम करती है तो इनके मुंह में दही जम जाती है, लेकिन जब हम एक छोटी सी गलती भी करते हैं तो पहले से आलोचना करने के लिए तैयार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद प्रधानमंत्री जी ये बात भूल गए कि जो अपोजिशन पार्टी बैठते हैं पार्लियामेंट पे वो सरकार की गलत चीजों को पूरा करने के लिए होते हैं। मेरा कर्तव्य है। बस ये नहीं, हम सरकार को अपोज नहीं करते, बल्कि जो सरकार अच्छा काम करते हैं हम उसकी प्रशंसा भी करते हैं, पर जो गलत चीज है उसको गलत कहने की काबिलियत है, हिम्मत है, दम है। सभापति महोदय, मैं मानता हूँ सत्ता की आलोचना विपक्ष कर सकती है, क्षमता है और करनी भी चाहिए, लेकिन अगर आंकड़े ही गलत हो वो आलोचना तो अस्वीकार्य है। Order. Both benches are equally requested to uphold the decorum of the House. Honorable Leader of the House, please continue. धन्यवाद महोदय। और माननीय सदस्य, हाँ, अगर कोई चीज गलत हो तो वो गलत है कहने की हमारे पास भी काबिलियत है, क्षमता है और है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर उनके पास हिम्मत है, दम भी है, तो क्या किसानों की परेशानियों के बारे में सुनने का दम क्या सरकार के पास है? Order. The chair urges the treasury benches and the opposition to maintain the decorum of the House. Only remarks permitted by the chair shall form part of the record. The House shall proceed in a dignified manner. Members may now ask for questions. Madam Speaker, 15 districts in Rajasthan have got affected, even though the promises of river linking project have been around for almost half a decade now. इन जिलों में रहने वाले लोगों को कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है पीने लायक पानी के लिए। क्या ये है हमारा विकसित भारत? When will the government provide its promised water? Thank you, ma'am. Honorable Speaker, Madam, through you, let me say this loud and clear. The Eastern Rajasthan Canal project worth rupees massive 37,000 crore is not just a paper promise, it's a mission. Phase 1 will be completed by December 2026, which will benefit 15 lakh hectares of land. Yes, the youth are demanding speed, and rightfully so. This is why we are pushing this project like a lifeline, clearing out all the hurdles and accelerating every single step. इस बार पानी सिर्फ कागजों में नहीं, खेतों और घरों तक पहुंचेगा। This project will not be delayed and it will surely be delivered. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पल में मुझे एक प्रसिद्ध कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। ना नौकरी है पक्की, ना घर की कोई बात, हर मोड़ पे उम्मीदों की बस 100 बात। किराए की दीवारों में सपने टूट जाते हैं और हुक्मरानों की नीतियों पर बस कागज मुस्कुराते हैं, बस कागज मुस्कुराते हैं। Madam Speaker, why, despite years of powers and numerous promises, are our city's youth still forced to spend 60% of their incomes on rent? Will the ruling party take urgent and concrete steps to ensure that affordable housing becomes a reality and not just an election slogan? Madam Speaker, we are supporting young professionals under the age of 35 with special rental housing schemes. We are giving 2.5 lakh rupees in credit to first-time home buyers and building 500 rental complexes to give our migrants a place they can go home. Madam Speaker, हम मकान बनाते हैं और वे कविताएं पढ़ते हैं। शायरी सुंदर होती तो है, लेकिन देश चलाने के लिए सिर्फ कागज पर मुस्कुराना नहीं, जमीन पर ईमान दिखानी पड़ती है। ये सरकार शब्दों से नहीं, वास्तविक निर्माण से आवाज दे रही है। धन्यवाद अध्यक्ष। Madam Speaker, the student suicide rate has increased by 40% post-COVID, but there are only 0.75 psychiatrists per lakh population. What are the comprehensive mental health policy details and what is the action plan?
Honorable Speaker, ma'am, the National Mental Health Mission is operational with over 2 lakh counselors in schools and other educational institutions. The toll helpline number 14416 is available and is functional 24/7. Guidelines have already been developed in order to empower teachers to identify suicidal and other risk factors of such behavior among students. I request the honorable member to get his facts straight. उनको सिर्फ यही दिखता है कि आगे से क्या होता है, अंदर से जो मेहनत सत्ता करती है उनको ये नहीं दिखता। Madam Speaker, while our very own Prime Minister proudly declares India as the 4th largest economy, it becomes a must for us to ask, what does this economic trump mean if half of our population feels unsafe? Speaker ma'am, we live in a nation where we worship Durga Ma and Saraswati Ma. But in our cities, but in capital letters, Speaker ma'am, women's safety, especially at the workplace, has become a matter of urgent national concern. क्या सरकार नारी शक्ति को सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित रखना चाहती है? So I urge the government to take urgent and proper steps regarding this matter. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है। हमने 1000 फास्ट ट्रैक अदालतें शुरू की है, महिला उद्यमों के लिए 50,000 करोड़ रुपयों का कोष स्थापित किया है और मोबाइल फोन में पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया है। तो मैं आपसे कृपया निवेदन करती हूँ कि आप उंगली उठाने के बजाय अपने पार्टी के शासित राज्यों में कार्यवाही की कमी करेंगे। धन्यवाद महोदय। Honorable Minister of Finance for final response. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने एक स्पष्ट एवं दृढ़तापूर्ण एक्शन प्लान शुरू किया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। रोजगार, हर साल 2 करोड़ नए रोजगार का लक्ष्य है। हर 6 महीने में रिपोर्ट पेश की जाएगी। कृषि सब्सिडीज डीबीटी से मिल रही है। क्लाइमेट फंड भी काम कर रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा 2027 तक यूनिवर्सल हेल्थ केयर, 2026 तक डिजिटल एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही रिसर्च फंडिंग भी दुगनी की जाएगी। बजट संकल्प 15 लाख करोड़ रुपए रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए रखा गया है। साथ ही महोदय 30 दिनों में सांसदीय समिति और इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म शुरू होगा। धन्यवाद। I thank all the members for this productive debate. Government comprehensive commitment noted, taken report within 90 days. Parliamentary Committee on Youth Affairs to be constituted as promised, regular monitoring through parliamentary procedures. This debate reflects our democracy's strength. Many youth parliamentarians have raised the critical issues with maturity. Honorable members, we shall now proceed with the legislative business as listed for today. At this juncture, I call upon the Honorable Minister of Electronics and IT, Srimati Divya, to move that the AI and Social Media Control Bill 2025 for its consideration and for its introduction. Honorable Speaker, sir, I rise to move that the AI and Social Media Control Bill 2025 be taken into consideration. We are living through a technological revolution, and that's transforming how we think, work, and govern. AI is no longer a science fiction. It's a part of our daily life. But innovation without responsibility can be dangerous. That's why this bill ensures that AI serves humanity, not the other way around. It rests on 4 key pillars. Number 1, clear rules for AI system. Number 2, mandatory fairness and transparency. Number 3, protection of citizens' data. Number 4, encouragement of research and innovation. Sir, this bill isn't about controlling people. It's about guiding technology before it controls us. With that intent, I commend the bill to this House for the discussion and passes. Thank you, sir. The Artificial Intelligence and Social Media Control Bill 2025 has been introduced. Now I call upon the honorable members to participate in the discussion. Honorable Speaker, sir, let us call this bill what it truly is, a Trojan horse of surveillance wrapped in the language of safety. This bill gives sweeping power to the government in the name of social control. What are these vague words, sir? Who decides what is socially acceptable? Today may be used to corrupt fake news, tomorrow it could be used to corrupt dissent. AI is supposed to make life freer, not turn every citizen into a mine of data under government watch. Speaker, sir, the government proudly speaks of digital empowerment but practices digital authoritarianism. Where are the check and balances? What assurance do we have that these AI systems will not be twisted into the tools of political profiling
election manipulation, or targeting of opponents. Sir, I say this with deep concern. This bill, if passed without robust safeguards, could make the big brother look small. माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अलग-अलग रायों को मानते हैं, लेकिन नीतियाँ दर के आधार पर नहीं बनी चाहिए। ये बिल किसी की जासूसी करने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर नियम बनाने के लिए है। इस बिल के तहत हर AI सिस्टम की ईमानदारी जांच होगी, उसकी रिपोर्ट जारी होगी और हर फैसले की जिम्मेदारी तय होगी। इस बिल में कोई भी सरकारी विभाग बिना निगरानी के कोई काम नहीं कर पाएगा। महोदय, इस बिल का मकसद लोगों के विचारों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि बिना नियमों वाले AI से फैलने वाले अव्यवस्थाओं को रोकना है, क्योंकि बेकाबू AI आजादी नहीं, सिर्फ उलझने बढ़ाती है। धन्यवाद महोदय। Honorable Speaker, while the Minister speaks of innovation, the ground reality is very different. AI is replacing human workers faster than policies can respond. Jobs in banking, logistics, education, even journalism are being automated. And yet, this bill speaks only of research and not of rehabilitation. Will this government tell the House what happens to the lakhs of workers whose livelihoods will be taken over by machines? Or should we just tell them to learn coding while they're standing in unemployment lines? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता को पूरी तरह समझती हूँ, लेकिन एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, AI किसी की नौकरी लेने नहीं आया है। ये तो नए काम, नए स्किल और नए मौके पैदा कर रहा है। इस बिल के जरिए हम नेशनल री-स्किलिंग और AI लिटरेसी मिशन शुरू कर रहे हैं, जहाँ लाखों लोगों को आसान तरीके से रोबोटिक्स, डेटा मैनेजमेंट और AI से जुड़ी सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। हम टेक्नोलॉजी को इंसानों की जगह लेने नहीं दे रहे हैं, हम तो इंसानों को इतना सक्षम बना रहे हैं कि वे खुद टेक्नोलॉजी को संभाल सके। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, भारत AI के दौर में आगे बढ़ेगा और एक भी नागरिक पीछे नहीं छूटेगा। धन्यवाद महोदय। Honorable Speaker, sir, the bill so clearly said that AI must be designed to prioritize human value and empathy. It should also have the safeguards to protect our society from causing any harm. Thank you, Honorable Speaker, sir. This concern goes to the heart of the bill. That is why we're establishing a national AI ethics council comprising of scientists, representatives, social leaders, and civil society members to ensure that AI decisions are not just intelligent, but they are also moral and deeply human. Thank you, Speaker, sir. Honorable Speaker, sir, I have listened to all the stalled promises, but beneath them lies the dangerous reality. This bill, with its broad definition, vague oversight, and concentrated power, is a digital dagger aimed at the heart of democracy. You say it's for the people, but who decides what AI can say, what it can show, and who it can serve? You call it social control, I call it state control. You claim it will protect privacy, but where are the privacy guarantees? Where are the rights of the citizens to challenge AI bias and automated injustice? Honorable Speaker, sir, if unchecked, this bill would not create a digital democracy, but a digital monarchy, where algorithms answer to authority and not accountability. Thank you, Honorable Speaker, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन उनके बाद सहमत नहीं हूँ। ये बिल जनता की सुरक्षा के लिए है। ये किसी को बेइंतहा ताकत नहीं देता, बल्कि जिम्मेदारी सबके बीच बांधता है। हर AI सिस्टम की निगरानी एक स्वतंत्र आयोग रखेगा, जिसमें विपक्ष, न्यायपालिका और विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये नियंत्रण नहीं, जवाबदेही है। हम चाहते हैं कि AI इंसानों की मदद करे, न कि उन पर हुक्म। सरकार तकनीक से डरती नहीं, उसे सही दिशा दिखाती है। महोदय, इस बिल का मकसद लोगों के विचारों को दबाने के लिए नहीं, लोगों की गरिमा बचाने के लिए है। ये राजनीति नहीं, भारत के भविष्य का सवाल है। इसीलिए मैं इस सदन से अनुरोध करती हूँ कि इस बिल को पारित किया जाए। धन्यवाद महोदय। Clause 2 to Clause 12. The question is that this clauses then part of the bill. Those in favor say aye. Aye. Those against say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. This clauses then part of the bill. We shall now take up the Clause 1, the enacting formula and the short title of the bill. The question is that Clause 1 is then part of the bill. Those in favor say aye. Aye. Those against say no. No.
I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, stand part of the bill. Honorable Minister of Electronics and IT, please. Speaker, sir, I move that the bill be passed. The question is, the Artificial Intelligence and the Social Media Control Bill 2025 be passed. Those in favor say aye. Aye. Those against say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. I direct the Secretary General to transmit the bill to the Rajya Sabha for its consideration. Yes, sir. The House shall take up the private member business, consideration and introduction of private member bill. Item number 21, the Dual Time Zone Establishment and Regulation Bill 2025. Honorable MP Srinath. Honorable Speaker, sir, today I rise to seek leave to introduce the Dual Time Zones Establishment and Regulations Bill 2025. India, spanning over 30 degrees of longitude, still continues to function under a single time zone, the Indian Standard Time (UTC) plus 5:30. While this may have suited the administrative needs of a newly independent nation, today it represents a disregard for our eastern and northeastern states. In the northeast, the sun rises as early as 4 a.m. and sets by 4:30 p.m. By the time western India begins its day, the east has already lost precious daylight hours. This mismatch forces the people to work against their natural daylight cycles, leading to reduced productivity, increased electricity usage, and adverse effects on health and education. Honorable Speaker, sir, this bill proposes the establishment of a second official time zone, the Eastern Standard Time (UTC) plus 6:30, for all the states and union territories east of the 89 degrees 30 minutes east meridian. The aim is simple: to align human activity with the natural rhythm of daylight, ensuring fairness, efficiency, and regional equity. So, I urge this August House to kindly allow the introduction of this bill and to recognize the long-standing demand of our brothers and sisters from Northeast. Thank you, Honorable Speaker, sir. Permission granted. The member may now present the substance of the bill for discussion. Speaker, sir, I rise in strong support of this bill. This is not about clocks, it's about justice. In Assam, people lose almost 2 hours of usable daylight daily. That's nearly 700 hours a year. If nations like the United States, Russia, and Australia can manage multiple time zones efficiently, surely India can too. This is a step towards rational federalism and regional sensitivity. Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, as a representative from the South, I see the merit in this bill. Our diversity demands flexibility and not rigidity. A dual-time system would display India's administrative maturity and respect for federal realities. Therefore, I commend the member for his vision. Thank you, Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir, हमारे Himalayan states often feel invisible in national planning. But CSIR and IIT Guwahati की studies show that dual time zones will save billions in energy costs annually. ये बिल भावनाओं पर नहीं, डेटा पर आधारित है. It's about efficiency and inclusion. Thank you, Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir, I appreciate the intention behind this bill, but I must oppose it. Introducing dual time zones will lead to unnecessary confusion, affecting train schedules, co-timing, broadcast, or even examination. Rather than dividing time, we should focus on improving work flexibility within the current system. India's unity and coordination should not be compromised for regional convenience. Thank you, Speaker, sir. Honorable Speaker, sir, imagine the chaos when schools, students, and even national examinations start running on different clocks. Our digital and transport infrastructure is not yet ready for this change. Sir, while the bill proposed by the member is well intended and noble, it could lead to operational disorder and widespread miscommunication at a country of our scale. Speaker, sir, are we truly ready for this change? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सहयोगी के इरादे का सम्मान करती हूँ, मगर अगर ये विधेयक जल्दबाजी में लागू किया गया तो बाद में सामाजिक अराजकता फैल सकती है। हालांकि पूर्वोत्तर की स्थिति अभी स्थिर है, इसलिए मैं इस विधेयक को जल्दबाजी में खारिज करने की बजाय एक संयुक्त संसदीय समिति को सुझाव देती हूँ, जो कि इसे विवादता को वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर सके, ताकि हम अभी के लिए थोड़ा भावनाओं को कम महत्व देकर सत्य को ही ध्यान में रखकर कार्य कर सके। धन्यवाद। Honorable Speaker, sir, I thank the honorable members for their valuable insights. To my colleagues worried about confusion, let me offer some clarity.
Our national institutions like the railways, parliament and all India radio services will continue to function on Indian Standard Time. Nothing changes for them. The proposed Eastern Standard Time will only apply to state-level administrations, offices and institutions in the eastern and northeastern parts of our country. Let us keep in mind that in today's digital India, where companies operate across multiple time zones daily, managing the 2 time zones within our borders is entirely feasible. This bill is not about dividing India, it is about aligning governance with geography and daylight. So, the real question that lies before us is not whether India can manage dual time zones, but why it hasn't yet when every other large nation already does. Thank you, Honorable Speaker, sir. Speaker, sir, I commend the honorable members for bringing this issue to the House and precision. The government acknowledged the concerns of our northeastern states and the scientific rationale. However, this matters involves technical, administrative, and logistical implications across ministries, including transport, broadcasting, power distribution, and governance. It cannot be decided in. Therefore, with the permission of the chair, the government proposes that this bill be referred to a joint parliamentary committee consisting of 31 members from both houses. National implications of using dual time zones in India. Thank you, Speaker, sir. Proposal by the Honorable Minister of Parliamentary Affairs to constitute a joint parliamentary committee is accepted. The committee shall consist of 31 members, 21 from the Lok Sabha and 10 from the Rajya Sabha, representing the different parties and regions. I hereby appoint Srimati Krishni, the leader of opposition in Lok Sabha, as the chairman of this committee. The committee is directed to examine the deep matters in detail and report to this House within the 3 months. Accordingly, the Dual Time Zone Establishment and Regulation Bill 2025 stands referred to this committee for further examination and for its report. Honorable members, as we conclude today's proceeding, I would like to extend my sincere appreciation to all the members for their active participation, insightful deliberation, and the unwavering commitment demonstrated throughout this session. Your dedication has contributed to a remarkable step forward in ensuring a mentally resilient India. Now there is being no further business as listed for today's, the House then adjourned to meet again at 11 a.m. on Wednesday, 3rd December 2025. Jai Hind. Mistake was from what we can say that the way they conducted in regional office, regional week, the mistake from there and it carry forward it. So because of that it happened. But I assure you that it will not affect anything which goes on here. Your performance will be judged as part of the others also. हमें एक दिक्कत आएगी थी क्योंकि चेस्ट नंबर से नोट करके कितनी बार कौन बोला वो चेस्ट नंबर हमें लिखना पड़ा, हमको टैली करना पड़ा।
चलो किसी टीम के साथ तो मुझे बहुत जाने का मौका मिला। जल्दी आ जाओ। चलो आपको